Hello students, we are going to take up today the topic benzene diazonium chloride. Most interesting topic. Now why benzene diazonium chloride is important? क्योंकि इससे आप बहुत सारे benzene के aromatic compounds, benzene derived compounds बना सकते हैं. Okay, so let's take up one by one. सबसे पहले let's see ये बनाते कैसे. So how benzene diazonium chloride is formed. So the name of the reaction is diazotization. Now in diazotization what do? हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, सॉरी वी टेक एनिलीन और एनिलीन को कंबाइन करते हैं विद नाइट्रस एसिड एंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द कंडीशन इज आइस कोल्ड कंडीशन, that is temperature is 0 degree centigrade. Now always remember nitrous acid जो है वो कैसा एसिड है, इट इज़ अनस्टेबल एसिड. मतलब जैसे इसको एयर के कांटेक्ट में आएगा ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में. ओके, नाउ वी वांट नाइट्रस एसिड ओनली, सो व्हाट डू? हम इसको रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाते हैं. तो कैसे बनाते हैं? वी टेक सोडियम नाइट्राइट और वी टेक पोटेशियम नाइट्राइट और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं. सो व्हाट डू वी गेट? NO2 फ्रॉम NaNO2 एंड H फ्रॉम HCl क्या बना देगा? HNO2. तो हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में सपोज वी हैव टू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, वी टेक एनिलीन राइट और उसको आइस पिक्चर में रख देते हैं सो दैट कंडीशन इज आइस कोल्ड राइट, एंड we add what the mixture of NaNO2 and HCl and excess. So what do you get? You get benzene diazonium chloride. Okay, है interesting. Now next take up the chemical properties. So इसकी chemical properties थोड़ी सी different है. Like if you replace chloro group, replace chloro with H या OH, NO2. So how to replace? So let's take one by one. So when we take benzene diazonium chloride and we treat this with H3PO2, right, in presence of water. So what will happen? Chlorine is there, so chlorine combines. Now water को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH. So let's take a different color का पेन ले लेते हैं. तो क्लोरीन और H मिलके क्या बनाएंगे? HCl. ओके, ये ऑक्सीजन और H3PO2 मिलके क्या बनाएंगे? H3PO3. Now what are you left? एक हाइड्रोजन बच गया. Okay, now when we add these, so what will happen? नाइट्रोजन अपने आप से बाहर निकल जाएगा. ओके, और अब क्या बचा? C6H5 और H यहाँ से, सो यू विल गेट बेंजीन C6H6. तो रिएक्शन क्या होगा? C6H5 into Cl when combines with H3PO2 plus water, it is going to form C6H6 benzene plus nitrogen plus HCl plus H3PO3. ओके, तो अगर आपको एक बार ये रिएक्शन समझ में आ गया तो अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड, आप समझ के रिएक्शन को प्रैक्टिस कर लीजिए. ओके, नेक्स्ट, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं और इसको रिएक्ट करते हैं विद HNO2 राइट, तो हम इसको रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड हमने क्या लिया है? Cu2O लिया है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? ये देख लीजिए, ये जो H है ये H Cl के साथ क्या बनाएगा? HCl. ओके, ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और NO2 जो है यहाँ लग जाएगा, तो सेकंड हमारा NO2 भी रिप्लेस हो गया. सो C6H5 N2Cl plus HNO2 in presence of Cu2O, what will happen? ये HCl बन गया, ठीक है, एंड यू गेट C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन एंड नाइट्रोजन. है ना इंटरेस्टिंग रिएक्शन? ओके राइट. नेक्स्ट, इफ वी वांट टू रिप्लेस OH, ओके, सो अगर हम OH रिप्लेस करते हैं तो रिएक्शन और भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो व्हाट विल हैपन? हमने क्या लिया? C6H5N2Cl और हमने ले लिया CH3CH2OH. ओके, सो व्हाट विल हैपन? ये हमारा नाइट्रोजन N2 विल कम आउट. ओके, और क्या होगा? ये एक H जो है, दिस H इज गोइंग टू कंबाइन विद
Cl. So we'll get what? HCl. तो इसको रिएक्शन को एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपने नोट कर ही लिया होगा. Okay, right? So you'll get what? Okay, let's take this color pen. So C6H5. Okay, नाइट्रोजन बाहर आ गया. ठीक है, ये HCl बन गया. Now what are you left with? CH3CH2O. ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, और हमारा एक H आ गया. ये H we'll give to benzene, so you'll get C6H5H, right? So the product will be acetaldehyde. अगर हमने इथेनॉल लिया है, so you will get acetaldehyde, और ethanol का one hydrogen will combine with chlorine to form HCl, and second hydrogen will combine with C6H5 to form benzene. तो रिएक्शन समझ में आ गया आपको. ओके, नेक्स्ट अगर हम इसको वाटर से ट्रीट करते हैं, सो व्हेन वी टेक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड ट्रीट दिस विद वाटर, सो व्हाट विल हैपन अगेन? HNCl will form HCl, right? Nitrogen will come out, and what? Yes, very right. Now what are you going to get? C6H5OH. C6H5OH. So this is how we have replaced finally this N2Cl with OH group. Okay, so these are very interesting reactions. इनको कर लीजिए, इनमें से ज़रूर आपके reactions आएंगे. ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेम रिएक्शन. सो फर्स्ट वी टेक अप सैनमेयर रिएक्शन. सैनमेयर रिएक्शन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट डू वी डू? इसमें हम क्या करते हैं? वी टेक C6H5N2Cl लिया हमने, राइट? नाउ वी डोंट वांट दिस टू बी क्लोरो. ओके, हम वी डोंट वांट नाइट्रोजन, वी डोंट वांट से क्लोरीन, हमें यहाँ पे ब्रोमाइड चाहिए, right? Suppose the product is C6H5 bromide. So how will you obtain bromobenzene from benzene diazonium chloride? So the best way is to use Senmeyer reaction. Now अगर bromide चाहिए, in that case you use hydrobromic acid. अगर chloride चाहिए, then you use hydrochloric acid, right? Along with CuCl. So cuprous chloride के साथ HCl या HBr ले लीजिए. लाइकवाइज CuCl के साथ आप HCl ले सकते हैं. इन दैट केस ब्रोमाइड की जगह क्या आ जाएगा? Cn. Okay, so what will be the reaction? Now here cuprous chloride is conditioned. So Sandmeyer reaction में क्या होगा? C6H5N2Cl when combines with say HBr in presence of CuCl. So what will happen? You will get HCl, you will get nitrogen, and you will get C6H5Br. C6H5Br. अगर आपने यहाँ पे कर दिया HCN, in that case क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा, ये H और Cl HCl बन जाएगा. C6H5CN आपका प्रोडक्ट होगा. ओके, right? So this is Senmeyer reaction. After Senmeyer we take up the Getterman reaction. Now Getterman reaction में क्या फ़र्क है? Senmeyer में you are taking CuCl, right? और Getterman में हम क्या कर रहे हैं? We are just taking copper. Okay, so difference is clear. We are taking copper. Again, what will happen if we take copper, right? So you are going to get this copper now. Now Senmeyer में क्या है? You're using CuCl. Getterman में आप CuCl बना रहे हो. You are preparing. तो remember, इसमें confuse मत कीजिएगा. So what do? We take copper. So copper absorbs chlorine and you get CuCl, right? Then nitrogen is released. Okay, and you get what? C6H5Cl. C6H5Cl, right? So this is Getterman reaction. Next we talk about Balz-shiemann reaction. Balz-shiemann is again very important reaction.
क्योंकि बॉल्शमिन से क्या है, आप अभी तक हमने क्लोरो बेंजीन बनाया, ब्रोमो बेंजीन बनाया, नाउ यू कैन प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन. Okay, so what do? We take in Balz-shiemann reaction, we take benzene diazonium chloride and treat this with HBF4 hydrobromofluoric acid. Right, now this is what hydrogen fluoride and boron trifluoride ka combination. So what will you get? Now this Cl is there, so this Cl will combine with hydrogen to form HCl. Okay, boron trifluoride will be released as such, BF3. Nitrogen will be released as such. Now what are you left with? C6H5 और ये fluorine बच गया. So the product is C6H5F. Right? So this is Balz-shiemann reaction where we prepare fluorobenzene. Now last we talk about coupling reaction. ये reaction हमने पहले aniline या phenol में किया है. Again this is very important reaction. Coupling reaction का मतलब है bringing two benzene rings together. So what do? We take benzene diazonium chloride, combine this with aniline or combine this with phenol. Right, now again ice cool conditions are there. So what happens, since aniline and phenol both are orthopara directing. Okay, so what happens, अगर हम ortho पे बनाते तो इतना बड़ा group will make this compound unstable. So para position से hydrogen of aniline or hydrogen of phenol combines to form HCl. Right, और ये product add हो जाता है. So you get C6H5N2, here C6H4NH2, और अदरवाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड, राइट, NH2. Okay, so you get orange, bright orange color dye अगर एनिलीन है, और फिनॉल है तो थोड़ा सा रेडिश कलर का dye. Okay, so this is coupling reaction and these are the reactions of benzene diazonium chloride. Hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. I have taken this topic because many students requested कि हमको ये benzene diazonium chloride थोड़ा सा difficult लग रहा है. So children, this is very easy topic. अब आप इसको practice कर लीजिए और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे. ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू.